So recording has been started. Okay, so next topic is your the measures of dispersion. Okay, so we will discuss today the topic that is measures of dispersion. Fine. So measures of dispersion, the measures of dispersion says now along with the central tendency we have to measure the variations present in the data. So dispersion means what are how the data is dispersed. So what is the meaning of dispersion? General meaning of dispersion is, tell me what do you mean by a dispersion? Hello? What do you mean by dispersion? So dispersion means if I'll tell you disperse from the class, so that means if all the students are sitting in together, now the dispersion means I'll tell the students to get variations in the, so some student is sitting over here, some on the ground and somebody in the other part of the university, so that means be the dispersion. So we have to calculate the variations present in the data. So that is the another measure, and it is important measure also as it tells the variation present in the data. So let's take the example to explain what do you mean by deviation. So take the example like if it is 1, 2, 3, 4 and 5. Okay. So what is the mean of this data? Central tendency value of this data is, what is the central tendency value for this data? 3. 3 is the central tendency value. So and the another is 3, 3, 3, 3. Now what is the central tendency value for this type of data? What is the central tendency value for this type of data? Sir, again 3. So this is data 2. So the central tendency value for this, if we are calculating the mean for this data, so mean for this data is 3 and the mean for this data is also 3, because 3 plus 3 plus 3 plus 3 plus 3 divided by 5 is again 3. So the mean of the previous data 1 and data 2 is 3. So if we are representing only the measures of central tendency, both the data will give the same number as 3. But if the two data are same, if these two data are same, according to the central tendency value, both the data is same, both has the mean value of 3. But actually if the both the data are same or not? No, Tell sir. me, both the data are same or not? If they are same or not? No, sir. They are not same. One is 1 2 3 4 5, another is all the data is equal to 3, so they are not same. But if we are comparing only the central tendency value, the central tendency says that the data should be of the same type. But what distinguish the both? इन दोनों डेटा को अलग क्या कर रहा है? अगर हम सेंट्रल टेंडेंसी के साथ if we tell the measures of dispersion also, then only the characteristic will be clear कि if the data is of data 1 type or if the data is of data 2 types. If I only tell the central tendency figure, I don't come to know that if the data is of data 1 type or data 2 type. But if I'll tell the measures of central tendency along with the measure of dispersion, then I can tell that if the data is of the data 1 type or the data is of the data 2 types. Fine. So what is the difference between the dispersion of data 1 and data 2? Which has the more dispersion? Seeing the data, which data has more dispersion and which has less dispersion? Sir, more is data 1. Sorry? Data 1 has more variations.
So data 1 has more variations because 1 is also present and 5 is also present. But if you'll see the data 2, there is no variation at all the elements are same. So there will be no variations present in the data. So that's why the measures of dispersion will quantify the presence of variation in the data. So seeing the data 1, we have calculated that where we have a huge dispersions, like we have 1, 2, 3. So there will be a variation in the data. So we have the element of 1 also, 2 also, 3 also in the data. But if we talk of the data 2, there will be all elements which are similar in nature. All are 3. So there will be no variation in the data present. So that's why the data 2 has the measures of dispersion. If we calculate the measures of dispersion, so for data 2 it is 0. There will be no variations. All are the same value. So there will be a 0 measures of dispersion. But if I calculate the measures of dispersion for data 1, it is having some number, which depends upon the method in which I am calculating my measures of dispersion. So as the measure of central tendency can be measured with 3 ways, mean, median and mode, the measures of dispersion can be taken by 4 methods. Measures of dispersion has 4 methods. The first one is range. The second one is your mean deviation. One is your standard deviation. And the fourth one is your variance. So these are the 4 tools to measure the measures of dispersion. So these are the 4 tools which help me the quantification of the variation in the data. I will not say after measures of dispersion, I will not say that the variation is more or less. I will tell that the measures of dispersion, the quantification, like if it is plus minus 2, plus minus 4, plus minus 6 and so on. So what will be the variation in the overall data present? I will quantify it with the help of measures of dispersion. Without measures of dispersion, I can only say that this data has more dispersion or less dispersion, but I cannot quantify it, I cannot measure it. But being a statistics, we want to know the measurements. So for that, to measure the dispersion, to quantify the dispersion, we have these 4 tools: range, mean deviation, standard deviation and variance. Clear? So the logic of dispersion is clear to you, that we have to calculate the dispersion in that way where we want to calculate the quantification of the variations present in the data. So it will help me to calculate the variations present in the data. So suppose in a class we have a student scoring all the student has scored the same marks. So I simply tell the management that there will be no dispersion in the data and every student has the equal marks. But if my class has a students like who has scored 1 also, 30 also, 2 marks also, 28 also. So there will be saying that there will be a huge variations present in the data. So maybe the central value is 15. Every student has scored 15 marks. Or the second case is one student has scored 1, 1 has 32, 229, 328 and so on. So in that case also the mean is 15. But the measures of dispersion will be much higher in the case of the latter data, where we have the more variation. So the measures of dispersion also to be told in addition to the measure of central tendency to get the full information. अगर हमें पूरी इंफॉर्मेशन लेनी है तो सेंट्रल टेंडेंसी के साथ हमें मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन भी बताना पड़ेगा. So that is the logic of measures of dispersion. Clear? Any doubts in the concept of the dispersion, why we are using the measures of dispersion? Clear? So now the first tool under this measures of dispersion is the range. Range is the simplest form of the measures of dispersion. But we are hardly using this form. There is a limitation of this particular method. So the range says, so how you can calculate a range of the data? Whether it is a individual discrete, group discrete or continuous group. Range means Difference between higher and lower. highest value minus the lowest value. Highest value minus the lowest value, that is your range.
So that is the simplest form of the measures of dispersion. Clear? So that is the simplest form of the measures of dispersion, which says that the highest value minus the lowest value in the data. Fine. So highest value minus lowest value irrespective of the frequency. Suppose करो हमारा जो अब will take the example for this range 1, 2, suppose the range. Now what? So this is the data. So what is the range for this data? 9. The range will be 9. Now the second is 1, 6, 6, 5, 4, 3, 7, 8, 9, 2, 10. Now what is the range? Again 9, sir. Again the range becomes 9. So that is the drawback of the range. What is the drawback of a range? It will only take into its calculation the highest value and the lowest value. It does not consider the any value of other than the highest and lowest. So if we are only constrained with the highest and lowest, the range will only tell the highest in the data and the lowest in the data. So if we ignore these, so that is the major drawback of the range, that it only considers the extremities present in the data. It only takes into account the extremities of the data. It does not take into account each and every value into its calculation. उसने सिर्फ extreme को calculate किया है. It does not take into its in calculation the middle, the other terms. So that is the drawback of a range. But we are using a range to find the outliers present in the data. So we are using the range, but only to find the outliers present in the data. And what are the outliers? What are the outliers? Anybody? What I mean by outliers? So the data which is totally different from the other data value. Repeat करना एक बार. सर जो वैल्यू बाकी वैल्यू से बिल्कुल डिफरेंट आ रही है या उसके अलाइनमेंट में ना हो. Okay. Okay. Any other? Outliers. Outliers means somewhat you are correct that which value is altogether different from the others. So outshine you can say. So like any value which is present extraordinary high or low. So suppose a particular value is showing extraordinary high or low, so we can identify that value from the range. So that is known as the outliers. So for example, I have a questionnaire. I have filled a questionnaire particularly with the options of maybe from a 5-point Likert scale to strongly disagree to strongly agree. So we have made the 5-point Likert scale: strongly disagree, disagree, neutral, agree, and strongly agree. So now there will be a responses from the 1 to 5. So every respondent can answer between 1 to 5. So there is no other option to answer in between 1 to 5. So nobody can answer 6, nobody can answer 7, and so on. So everybody has to answer between the close and range of 1 to 5. Now every respondent has answered between 1 to 5, but being a researcher, when I start typing, or maybe you can say make my database in the form of Excel, by chance a typing mistake comes and instead of 5 I have typed 50. There is a typing mistake in the uploading of the data. By mistake I have uploaded 50 instead of 5. Now if I calculate the range of the data variable,
then the range of that particular thing comes out to be 49, because 1 is the minimum value and 50 is the maximum over there. So range comes out to be 49. So now I come to know that the range cannot be 49. According to the data, the range can be maximum of 4. 5 is the maximum, 1 is the minimum response. So the maximum range can be equal to 4. But my range comes out to be 49. So there I click, there is some error in the particular feeding of the data. So I will check only that particular variable. I am not to check the complete sheet. I have only to check that particular variable where the range comes as 49. So I will check that. From that I come to know that one value is mistaken by 50 rather than 5. So I can recheck it and correct the same. So that is the advantage of the range, to find the outliers present in the data. But otherwise, the range has very less meaning to it, because it does not consider each and every value into its consideration. It will take only the highest and the lowest value in the calculation, not the other values. So that's why we are hardly using range in our measures of dispersion, but only to find a specific purpose, to find the outliers we are using it, but otherwise we are not using the range in the normal measures of dispersion. Fine. So range is clear to you. So whether it is individual discrete, whether it is discrete grouped or continuous grouped, what is the, you have to check only the x, you don't deal with the f. What will be, एक भी वैल्यू अगर लोएस्ट वाली एक भी वैल्यू है वो लोएस्ट आ जाएगी, और हाईएस्ट जो वैल्यू है चाहे वो एक बार है चाहे वो 10 बार है, हमने तो वैल्यू देखनी है. तो वी डोंट कंसीडर f into its calculation. What is the lowest, what is the highest, difference between the two, you will get your range. Fine. So that is your range. Next comes the mean deviation. Fine. So we'll take the mean deviation. So first, for mean deviation for the individual discrete data. So like suppose the same data 1, 2, 3, 4 and 5. Suppose we want to find the mean dispersion for this data. Now the deviation is, I'm saying that deviation is the variations present in the data. So variation means we have to check the variation. So variations can be checked only with the particular reference point. हमें एक reference point तो लेना पड़ेगा ना जहां से variations निकालेंगे. We have to take one reference point from where we have to calculate the variations. So that reference point here, अब reference point अगर मैं ना लूं तो variations निकाल सकता हूं. I have to check the variations from a reference point, that what are the differences in the values from that reference point. So I need a reference point to calculate the dispersion of each and every element in the data from that data value. Fine. So for that, the measures of central tendency is taken as the reference. So that's why the measures of dispersion cannot be done without the knowledge of measures of central tendency. So for measures of dispersion, we require the knowledge of central tendency, then only we can calculate the measures of dispersion. So measures of dispersion says we require one reference value, and that reference value is your measures of central tendency, which can be mean, median or mode. But again, mean is the by default measure. If we want to find, we can find the dispersion about median or about mode. But if we are generally seeing that mean deviation, it is the deviation or dispersion around mean. Fine. So first is we have to calculate the dispersion. First is the central tendency. So what will be the mean value for this data? So as we have already calculated, the mean is equal to 3 for this particular data. Fine. So mean is 3, 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 divided by 5. So 15 divided by 5, it comes out to be 3. Now the logic is we have to find the variation of each and every element from this central value.
So we have to find the variations of each and every value present in the data from this central value. So how you can calculate? So how you can calculate the distance of each and every element with this central value? कैसे कैलकुलेट करोगे? x माइनस x बार अगर हम निकालें, x बार मीन मीन, x माइनस x मीन अगर हम करते हैं तो हमारे पास क्या आता है? हर एलिमेंट का जीरो। क्यों जीरो? फर्स्ट टर्म आएगी -2, देन -1, देन 0, देन 1 2 सर सारी। हाँ, अच्छा तुम टोटल आंसर बता रहे हो। ओके, सो x माइनस x बार बिकम्स the distance of each and every element from that central value. So the first element becomes -2, second becomes -1, then 0, then 1, and then 2. So it becomes -2, -1, 0, 1, 2. 1 minus 3 minus 2, 2 minus 3 minus 1, 3 minus 3 0, 4 minus 3 plus 1, 5 minus 3 plus 2. Now these are the individual variations of each and every element from the central value. Now if we make the total of these variations, so we have to make the total of these variations to calculate the total variation present in the data. So if we make the total of this, the answer becomes 0. As we have already told that if we make the sum of all the individual variations, so the summation becomes 0. So my mean deviation or the measure of dispersion becomes 0, which signifies that there is no variations present in the data. But if you see the data, if it is like this case, if there is no variation in the data, so actually if there is no variation present in the data, तब आंसर इसका 0 आना चाहिए था। हेलो हेलो हेलो, हाँ, आंसर हमारा कितना आ रहा है? 0। क्या हमारे डेटा को लॉजिकली देख के बताओ 0 आंसर कब आएगा? जब कोई भी वेरिएशन नहीं होंगी, जब डेटा 3 वाला होना चाहिए, तभी हमारा मेजर ऑफ डिस्पर्जन 0 आना चाहिए ना। और हमारा इस डेटा में 0 आ रहा है, क्यों आ रहा है? हमारा आंसर लॉजिकली 0 नहीं आना चाहिए, बट प्रैक्टिकली जब हम सॉल्व कर रहे हैं तो 0 डिस्पर्जन दिखा रहे हैं ना, वो तो कुछ गड़बड़ है। देयर इज सम एरर इन माय मेथड और सम कैलकुलेशन। तो वो क्या एरर है, क्यों 0 आया? सर हम मीन से ही डिस्पर्जन का फाइंड कर रहे हैं ना, अगर हम मीडियन और मॉड से करेंगे दैट्स नहीं, मीडियन से करोगे, मीडियन भी इसका 3 नहीं आएगा। इसका मीडियन निकाल लो, मीडियन भी तो 3 आएगा। सेंट्रल वैल्यू इसमें 3 है, 3 से वेरिएशन निकाल लो तब भी यही बनेगा। ये 0 क्यों आया? द रीजन फॉर दिस 0 इज, ये 0 आंसर क्यों आया? बिकॉज ये -2 + 2 से कैंसिल हो गया, ये -1 + 1 से कैंसिल हो गया, तभी तो आंसर 0 आया ना। -2 + 2 0 हो गया, -1 + 1 0 हो गया, और 0 तो 0 है ही, तो आंसर 0 आ गया। इसीलिए हमारी टोटल वेरिएशंस क्या हो गई? 0। बट हमारे लिए वेरिएशंस तो 1 भी थी और 5 भी थी ना, तो हमें ये नेगेटिव वेरिएशंस को किसी ना किसी तरीके से पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। अगर हमने इसका आंसर 0 नहीं लाना तो वी हैव टू मेक आवर नेगेटिव वेरिएशन इक्वल टू पॉजिटिव वेरिएशन।
जब तक हम अपनी नेगेटिव वेरिएशन को पॉजिटिव नहीं बनाएंगे तब तक वो ऐड नहीं ना होंगे, वो कैंसिल हो जाएंगे आपस में. So there must be some mechanism to convert my negative variations to positive variations so that they will not cancel out each other, they will add into the total dispersion. Getting my point? ये point समझ आ रहा है? Yes, sir. We take modulus, sir. हाँ. What we'll take, that is a separate issue, but the thing is, from this particular example, it is clear that we have to make our negative to positive. Negative variations को हमने positive बनाने. So then only we can contribute to the addition of all the variations present in the data. Okay? So now we have to check how we can convert our negative variations to positive. मैं अपनी negative variations को positive में change कैसे कर सकता हूँ? What are the various ways available with me to convert the negative variations to positive variation? I will ask mathematics and ask the mathematics that what are the various tools available with the mathematics to convert the negative number to positive. So mathematics will answer me that there will be two tools. One is the modulus and one is the square. So one tool available in mathematics to convert a negative number to positive is a modulus, and the another tool is known as your square. So when you will make a modulus of a number, so like -2 mod, it will take +2. -1 mod, it will take +1. So the result of a modulus is ignorance of the negative number. The equivalent positive numbers is your value of your modulus. So that is the first. And the second one is the square. Square is -2 square is 4. 1 minus 1 square is 1. -3 square is 9. So if you square the data, minus into minus becomes positive. So there will be two tools in the mathematics to convert the negative to positive. So one is mean, one is mod, one is square. So if we are using mod as a method to convert negative to positive, it is mean deviation. If we use square as the method to convert a negative to positive, it is your standard deviation. ठीक, अगर हम मॉड ऑपरेशन यूज करते हैं उस मेथड्स को हम मीन डेविएशन बोलते हैं. If we are using square as the measure to convert negative to positive, it is known as your standard deviation. Clear? So now the next thing is we want to calculate the mod of modulus of modulus can be represented by a number with two vertical lines. In Excel, I cannot draw these vertical lines, but in general, that's why I'm writing modulus complete. But you can simply write the x minus x bar under the two vertical lines, so that will show your modulus. So x minus x mean you have to calculate, which becomes 2, 1, 0, 1, 2. So x minus x mean modulus becomes -2 will change to 2, -1 will change to 1, then 0, 1, 2. Now the addition of the same, now the mean deviation is equal to what is the mean deviation of this data? 6. Deviation is 2 plus 1 3 plus 4 plus 2 6 divided by n. So the formula becomes, for mean deviation, the formula becomes MD is equal to summation of MD is equal to summation of mod this one is the symbol for mod x minus x mean and divided by n. So that becomes the formula for the
So x minus x mean summation. So sigma, and this is in the bracket. So that means first you have to make the x minus x mon mean summation, and then whatever the answers come, you have to divide it by n to get your mean deviation. Clear? So that is for individual discrete data. Fine enough? Any doubt in this? Any doubt in this? No, sir. No, sir. So now next is for grouped discrete data. So grouped discrete data is in the form of x and f. So x and f may be 23, 25, 26, 27, 29. So this is your x, f is 5, 3. So this will be the data of x and f. So this is the data of x, then this is the data of f. So this means it is a discrete grouped data. It is a discrete grouped data because 24 is not one time now. It is 5 times. So instead of writing 5, 5, 5, 24, 24, 24, we are writing 24 as 5 times, 25 as 3 times, and so on. So now we want to calculate the mean deviation for the same. So mean deviation, first for mean deviation, what do you want? अगर mean deviation निकालना है तो पहले क्या निकालना पड़ेगा? सबसे Sir, पहले we क्या? multiply f with x. पहले mean निकालना पड़ेगा. पहले हमें mean निकालना पड़ेगा. So for mean the formula is summation fx divided by summation f. Calculate the fx. So fx is equal to this into. So we will calculate the summation of fx. So summation of fx becomes, when we'll make the summation of the same, it will like 1196, and then divided by the summation of f. So 42. So our answer becomes for mean. So x mean becomes, x mean is equal to summation of fx divided by summation of f. So you will get 28.47619. So that will be your mean. Now to calculate the SD or MD, sorry. So you have to calculate x minus mean. You have to calculate x minus mean. So that will be equal to, अब x minus mean निकालना है, so which will be equal to 24 minus of 28.476. It will be minus 4.476, and similarly for 25 minus 28, 26 minus 28. So I use the property of Excel, so it will be calculated for me. But otherwise you can calculate it through calculator. मैं तो Excel पे कर रहा हूँ तो इसीलिए मैंने फॉर्मूला Excel पे लगा दिया, but otherwise you can solve it through your you can say a calculator, simple calculator, you can use it. So you will calculate x minus x bar. Now next step is पहले हमने इसका मीन निकाला, मीन आ गया हमारे पास 28.476. Now next step is We take modulus. Now next step is we have to take the modulus. So modulus is, so mod of x minus mean. We have to calculate the mod of x minus mean, so which is plus 4.476, then 476
2.476, 0.524, 3.524 and 4.524. So this becomes your x minus x mean mod. Now see, if this x 4.476 is not once, it is repeated 5 times. So then we have to calculate f into then you have to calculate f into x minus x. So that means you have to calculate is equal to this multiply by f. So because this is not only one time now, this is 5 times, this is 3 times. So we have to multiply f with the x minus x bar to calculate the total variation in the data. So when you will take it, these will be the individual variations. Now add these all variations. So if we are adding these total variations, this will be 139.904. So what will be the value of MD? So MD is equal to, so what is the formula for MD? For individual discrete, this is the formula. So what is the difference over here now? Sigma F into x minus x mean, and divided by, in place of some n, it becomes summation F. That becomes the formula for MD in case of grouped discrete data. X minus x mean ka mod into F divided by total number of elements, because there n is the total number of elements. Here the total number of elements are summation F. So the answer becomes, so for the grouped discrete data, the answer becomes 139 divided by summation F, which is 42. So answer becomes 3.331048. So if we calculate the mean deviation in the data, so it is equal to 3.331048. So that is the mean deviation of the discrete grouped data. Clear? Any doubt? No, sir. See the question once again. If you have any doubt, you can ask me this time only, because if we proceed further, it is very difficult to come back again. If you have any doubt in this point, we can discuss at here point, this point only. No doubt. मॉडुलस का एक बार बताइए सर, मॉडुलस क्यों लगाते हैं हम, मतलब पॉजिटिव क्यों बनाई जाती है? दोबारा बताना, आवाज क्लियर नहीं हुई। सर मैं कह रहा हूँ, ये जो मॉडुलस हमने लगाया है जो नेगेटिव वैल्यू में कन्वर्ट करने के लिए, ये हम क्यों लगाते हैं? हम क्यों नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाते हैं? देखो भाई, तो अभी ये देखो, अगर हम नेगेटिव टू पॉजिटिव नहीं करते तो हमारी नेगेटिव वेरिएशन पॉजिटिव से कैंसिल हो गई ना। हमारी नेगेटिव वेरिएशन पॉजिटिव से कैंसिल हो गई, तो हमारा जो रिजल्ट आया वो जीरो वेरिएशन आ गया। बट एक्चुअली क्या जीरो वेरिएशन है डेटा में? तो हमें तो नेगेटिव वेरिएशंस को पॉजिटिव बनाना पड़ेगा ना, तभी तो ये ऐड होंगी। नेगेटिव वेरिएशंस कैंसिल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमारे लिए जो रेफरेंस पॉइंट है उससे कम वाला डेटा है वो भी वेरिएशन है, उससे ऊपर वाला डेटा है वो भी वेरिएशन है। तो हमें तो टोटल वेरिएशन ऐड करनी है ना, तो इसीलिए हमें मॉड लेना पड़ा कि वो नेगेटिव वेरिएशन पॉजिटिव बन जाए और सारे कंट्रीब्यूट करें टोटल वेरिएशन निकालने के लिए। पर अगर हम नेगेटिव को पॉजिटिव नहीं करते तो नेगेटिव वेरिएशन तो हमारी पॉजिटिव को काट रही है ना, कम कर रही है, विच इज नॉट अ केस। सो दैट्स वाई हमें नेगेटिव वेरिएशंस को पॉजिटिव करना ही पड़ेगा। उसके लिए दो मेथड है, एक मॉड है, एक स्क्वायर है। मॉड लेते हैं तो मीन डेविएशन, स्क्वायर लेते हैं तो स्टैंडर्ड डेविएशन। तो बेसिकली जो नेगेटिव है, ये नेगेटिव नहीं है, डिफरेंस है कि एक वैल्यू का मीन से कितना डिफरेंस है, वो कितनी दूरी पे है। तो वो हमेशा वही है ना, हमने हर एलिमेंट का डिस्टेंस निकाला है फ्रॉम द रेफरेंस वैल्यू विच इज सेंट्रल डेंसिटी। तो अब वो अगर माइनस में आ रहा है डिफरेंस, उसको पॉजिटिव करना पड़ेगा ना, क्योंकि अदरवाइज तो हमने पॉजिटिव वेरिएशन ऐड करनी है ना, वेरिएशन तो तभी पता चलेंगे।
जी जी, तो एक्चुअली एक डिफरेंस है, ये कोई माइनस नहीं है, ये डिफरेंस है, और डिफरेंस हमेशा पॉजिटिव में ही होता है, तो इसलिए हम मॉडुलस लगा रहे हैं। एम आई राइट सर? नहीं, डिफरेंस हमेशा पॉजिटिव क्यों होता है? डिफरेंस नेगेटिव होता है? नहीं, यहाँ पे कंसेप्ट नहीं, ऐसे ये वाला कंसेप्ट नहीं है। डिस्टेंस इज नेगेटिव, बट क्योंकि हमने नेगेटिव वेरिएशंस को पॉजिटिव इसलिए किया कि हमारी जो, अब ये देखो, मान लो मेरा डेटा 1 2 3 4 5 है, अब मेरे लिए तो वेरिएशन 1 भी और 5 भी है ना। जी जी, अब 1 वाली वेरिएशन का आंसर तो -2 आ रहा है, 5 वाले का +2 आ रहा है, तो वो तो दोनों आपस में कैंसिल होगी ना। हाँ नहीं, लेकिन जो मुझे वो, डिफरेंस है वो तो सर ठीक है ना, तो -2 +2 एक अलग चीज होगी कि बड़े में से छोटा माइनस का हो गया, लेकिन डिफरेंस तो पॉजिटिव में ही काउंट होता है ना। मैं कहता हूँ दो चीजों में डिफरेंस है, तो डिफरेंस माइनस होगा। डिफरेंस का मतलब तो बड़े में से आप जब डिफरेंस लेते हैं तो फिर वो पॉजिटिव ही आता है हमेशा। को हमने पॉजिटिव कर दिया मॉडुलस से, क्योंकि हम वो पॉजिटिव क्यों किया ना, वही मैं समझाने की कोशिश, पॉजिटिव क्यों किया, बिकॉज वी हैव टू मेक दैट डिफरेंस और दैट वेरिएशन इनटू द एडिशन, कि वो कंट्रीब्यूट करे। अगर मैं उसको पॉजिटिव नहीं करता हूं तो वो तो कैंसल आउट कर देता है मेरी जो 5 वाली वेरिएशन है उसको भी। ठीक है, मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हमने किया, ठीक है। हाँ, तो उसको हमें कन्वर्ट पॉजिटिव में इसलिए करना पड़ा कि वो भी कंट्रीब्यूट करे टोटल वेरिएशन में। अगर हमने उसको नहीं करते तो वो तो जो पॉजिटिव वाली वेरिएशन है ना उसको भी कैंसिल कर देता है। अपनी तो क्या कंट्रीब्यूट करेगा, अपनी तो कंट्रीब्यूट कर नहीं रहा, जो दूसरी पॉजिटिव है उसको भी कैंसिल आउट करी जा रहा है। राइट। तो हमें इसीलिए नेगेटिव को पॉजिटिव बनाना पड़ेगा ताकि अपनी वेरिएशन भी ऐड हो और ऐड जो पॉजिटिव ऑलरेडी है उनको भी डिस्टर्ब ना करे। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू। ठीक, तो उसीलिए हमने मॉड ऑपरेशन लगाया है या स्क्वायर ऑपरेशन लगाया है। फाइन इनफ? जी जी, थैंक यू, थैंक यू। ओके, सो नेक्स्ट इज योर कंटिन्यूअस ग्रुप्ड। अब कंटिन्यूअस ग्रुप्ड डेटा में क्या होगा, x and f again, so there will be again x and f, so x will be now in the form of range, so 10 to 15. So 10 to 15, 15 to 20, maybe 20 to 25 होगा, then 25 to 30, and then 30 to 35. So suppose this will be your data. Now f is maybe 6, 8, 9, 5, 4. So this is suppose your f. Now what is the thing? Again you have to calculate the mean deviation for this data. So first you have to calculate the mean. अब mean निकालने के लिए क्या होगा इसमें? There is only one. So 10 plus 15 divided by 2, which is 12.5. So 12.5, 17.5, then you have 22.5, then 27.5, then 32.5. So this becomes your m. Now forget this x, you have to work, it is the same question now at is a discrete group. तो अब ये वाला क्वेश्चन क्या बन गया, it is the same as of discrete grouped data. So now you will perform the same operation as the discrete grouped in this particular case. तो ये discrete grouped की जगह summation fm, जो पूरा ये step किए हैं सारे, first you have to calculate the mean, which is summation fm divided by summation f, then you have to calculate m minus m bar, then modulus of m minus m bar, then f into m minus m bar mod. So some formula becomes summation of f into m minus m bar divided by summation f. So that comes as the MD for a grouped continuous data. क्लियर हो गई ये तीनों टाइप्स का डेटा का मीन डेविएशन?
ठीक है ये। अब नेक्स्ट आता है इफ वी वांट टू कैलकुलेट द मीन डेविएशन अबाउट मीडियन और अबाउट मोड। ये तो हमने अभी की है मीन के अबाउट। अगर हमने इसको करना होता मॉड या मीडियन के अबाउट, देन व्हाट इज द डिफरेंस? डिफरेंस क्या आता देन? बताओ what will be the difference in that case? सर x माइनस मीडियन करते देन। हाँ, बस जो हमने यहाँ पे पहले मीन निकाला था, समेशन एफ एक्स डिवाइडेड बाय समेशन एफ करके मीन निकाला था ना, अब हम उस डेटा का पहले, अब सपोज हम इस वाले क्वेश्चन को ही लेते हैं। हम सपोज इस वाले क्वेश्चन को ही लेते हैं। सो सपोज दिस विल बी माय क्वेश्चन। सो अब ये हमारा डेटा था, तो हमने अब पहले इसका मीडियन निकालना है। तो मीडियन के लिए पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। सो विच इज 5, 8, 15 plus 8 is 23, 25, then 25 plus 8 is 33, 9 is 42. So this becomes your cumulative frequency और ये total आ गया 42. So now you will check that is the even terms. तो एक मिडिल टर्म आएगी 21 और एक आएगी 20. एक आएगी 21 और एक आएगी 22. सो 21 और 22 दोनों यहीं लाई करेगी. सो मीडियन इज 26. सो मेरी मीडियन वैल्यू क्या आ जाएगी? 26. तो अब जब बस यहाँ पे जो कैलकुलेट होगा, अब x माइनस x मीडियन होगा. वहां पे बस मीन हुआ था, यहाँ पे मीडियन होगा. सो यू हैव टू मेक लाइक is equal to x minus 26. So you have to calculate this way. So this will be your x minus x median. Then you have to take the mod. तो अब इसका mod लोगे. So modulus of x minus x bar, it becomes 2 1 0 3 6 7. So this becomes this. Now you have to make it summation f into x minus this. So then you have to calculate f into this as in the same process over there. So there is no difference in the further process, but only calculate the median now in place of mean. So that becomes is equal to this into f. So that you will solve like this. Now summation of all that becomes summation of this. Your MD becomes, so mean deviation about median. So you have to write it like this. So the mean deviation about median is equal to, so which will be equal to 130 divided by this summation f. So that is 3.0952. So mean deviation about mean for the same data, mean deviation about mean comes out to be 3.33 and mean deviation about median comes out to be 3.09. Fine. So in that way you can calculate your mean deviation about median. So in case if it about mode, then you have to check the mode. So mode of the data is that one which has the maximum f value, which is 15. So 26 is the mode. So 26 also the median. So there will be no difference in the median and mode in this particular question. So the objective is we have to, if it is about mean, then we have to calculate first the mean and then we have to calculate x minus mean. Otherwise, if it is median, then we have to calculate the median and then we have to calculate x minus median and so on. So further process will remain the same. So, but the only difference in the value of the central tendency we want to find. Clear? Mean deviation is clear. So if it is come out to be any question, now you can do your mean deviation.
तो सिर्फ फर्क क्या होगा, डेटा में ही फर्क आएगा, अदरवाइज इफ द मीन डेविएशन इज देन यू कैन डू इन दिस वे. Clear enough? We'll start with the next. अगला करें. Yes, sir. Okay. So next is your standard deviation. अगला आता है अब standard deviation. Standard deviation use the concept of squaring to make the negative to positive. So हम same question लेंगे. So for this data, individual discrete, we want to calculate the standard deviation of this data. Fine. So we want to calculate the standard deviation for this data. So what is the standard deviation of this data? So what is the standard deviation? So again, if it is about mean, about median, or about mode. So by default, if it is about mean only, so we will calculate the x bar first. So mean comes out to be, so mean is 3. So mean of the data is 3. So we will calculate x minus x bar. So x minus x mean. So that will be the same process as we have done earlier. So x minus x bar becomes minus 2, minus 1, 0, 1, 2. So now the difference comes. Now instead of calculating x minus x mean mod, we are calculating x minus x mean calculating x minus x mean square. So we have to calculate x minus x mean square. So instead of take mod, we have to make the square. So that becomes 4, 1, 0, 1, 4. Fine. So instead of making this mod, we have to use the function as square. So this becomes 4, 1, 0, 1, 4. And then the summation of this rest process will be remain the same. So SD is, so standard deviation is summation of, so formula becomes, so formula becomes summation of x minus x minus x mean उसके घर वाले ने भी कैसे किया, चटभंगड़ी पट गया. to be removed from superscript, but it is not removed. Fine. So SD becomes summation of x minus x mean square divided by, it is also like this. Formula becomes x minus x mean square divided by n. So summation of this becomes 10. So SD becomes 10 divided by 5. So 10 divided by 5 is the 2, but we have taken the square of the data. So on, it is my basis.
The question is not saying to take the square. To make the negative to positive, I am making the square of my own. So I have to make the nullification of that particular square. So the nullification of that square can be taken by taking the under root of the data. So square root of the data. So we have to take the square root of this data. So SD becomes under root of. So the formula becomes so there is a symbol of under root there. I will not able to find that symbol. Yeah. So the formula becomes under root of summation x minus x mean square divided by n. So which is 10 by 2, which is 10 divided by 5. So 10 divided by 5 2 and 2 का under root, that is 1.41. So सर that n will का भी become अंडर रूट होएगा स्क्वायर रूट पूरे का complete. तो So सर the n का formula तो स्क्वायर becomes, भी नहीं किया था स्क्वायर नहीं किया बट फॉर्मूला में आएगा पूरे का अंडर रूट आएगा. ओके सर ठीक. So the formula becomes x minus x mean whole square divided by n under the root. Fine. So that becomes your SD for individual discrete data. Now we have to calculate the standard deviation for grouped data. So suppose this is the data now. अब इस डेटा का हमने so this comes out to be 1.414. ठीक. So अब हमने इस डेटा का निकालना है. So first again we have to find the, पहले वही मीन निकालना है. फर्स्ट स्टेप तो वही है, मीन निकला है. तो मीन तो हमने ऑलरेडी निकाला हुआ है यहाँ पे. सो 28.476 वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड इट. सो यही चीज़ रिपीट हो जाएगी. सो आई विल कॉपी दिस, और आई विल नॉट कॉपी दिस बट वी आर नोइंग द मीन इज दिस. सो नेक्स्ट इज वी वांट टू कैलकुलेट एक्स माइनस मीन. ठीक. यहाँ तक भी ये वाला स्टेप भी सेम रहेगा. सो आई विल कॉपी अप टू दिस नाउ. तो ये यहाँ तक तो सेम ही रहेगा. यहाँ तक तो डेटा में कोई फर्क नहीं आएगा. Fine. So there will be no difference in the question up to this point. So only the difference comes in the method of making this negative to positive. So instead of making mod, we are making square now. So we are making the function as square. So which is x minus mean raised to the power 2. Fine. So we have to calculate this. So that means we have to make this multiply by this only. So raised to the power, or we can use the power function, or I am using in an Excel. So I am taking as a power function. You can use your calculator. So power function of 2 will square. I am taking the square of all these data. So this becomes x minus x mean plus square, and then don't add these, because first you have to multiply this with f. ये याद रखना है, you have to multiply this with f. Fine.
इसको गलती यहाँ होती है, इसका सम कर देते हैं, बट दिस इज नॉट वंस, दिस इज 5 टाइम्स, सो वी हैव टू मल्टीप्लाई दिस नंबर विद f, so that becomes this into, so that becomes is equal to this into f, so that becomes this way. So now you have to add all this, so which comes out to be, if you will total of this, so this becomes the total. Now the formula for SD becomes, so the formula for SD becomes summation of क्या आएगा बताओ, so that becomes the we'll take the reference of this one. So that becomes the summation of f x minus x means square divided by summation of f का under the root. Fine. So this becomes the formula for the SD about mean. So where it is like x minus mean का square into f का summation divided by summation f and then the under root of the same. So that becomes, so answer is equal to, so answer is 512 divided by summation of f. So 1 second, we have to take first the summation of f, so which is 42. So this becomes is equal to 512, that is summation of f into x minus x1 square divided by summation f और इसका under the root. So that means, so you can calculate this first. So 12.20 and the under root of the same, so is equal to power function of this comma 1 by 2, 0.49311. So that becomes your SD about the data. Clear? So mean deviation of the same data is, mean deviation 3.33 आया था, अब स्टैंडर्ड डेविएशन कितना आया, 3.49. क्लियर? क्लियर हो गया ये? कोई डाउट है एसडी में तो बताओ. नो सर. बताओ. एनी डाउट? नो सर. नो सर. सर ये जो डेविएशन होते हैं, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, ये बेसिकली प्रैक्टिकली ये है कि हमारा जो डेटा है वो अपने ओरिजिनलिटी से या जहाँ जिसको होना चाहिए उससे कितना डेविएटेड है जो हम डेटा कलेक्ट करते हैं. तो इसमें जैसे 2 डेविएशन आपने बताई, मीन डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन, तो इन दोनों डेविएशन में प्रैक्टिकली क्या फ़र्क है? तो कौन सा डेविएशन ठीक रहता है, कौन सा हम यूज़ करें और कौन सा ज़्यादा बेटर रहता है एनालिसिस के दौरान? हम वैसे यूज कोई भी करो, बट हम जो यूज करते हैं दैट विल बी मोर यूज्ड एज एसडी. स्टैंडर्ड डेविएशन सबसे मेजर यूज होता है. जो ये स्टैंडर्ड डेविएशन है दैट विल बी मैक्सिमम यूज्ड मेजर फॉर द मेजर्स ऑफ कैलकुलेशन ऑफ डिस्पर्शन. ओके. अब जो इसके बाद हमने वेरिएंस करना है ना, जो लास्ट टू वेरिएंस है, वेरिएंस इज नथिंग बट द स्क्वायर ऑफ द एसडी. जो हमने यहाँ पे अंडर रूट किया है ना, तो हमने जो यहाँ पे स्क्वायर रूट किया है ना, वो हम स्क्वायर रूट नहीं करेंगे तो हमारा वो वेरिएंस आंसर आ गया. मतलब जैसे अगर मैं इस क्वेश्चन में बात करूं, हमने यहाँ पे अंडर रूट करके 3.49 निकाला, तो ये हमारा एसडी है और 12.20 हमारा वेरिएंस है. ठीक,
तो स्क्वायर ऑफ योर एसडी इज द वेरिएंस। तो वेरिएंस अपने आप में कुछ नहीं है, एसडी का अगर स्क्वायर कर देते हैं हमारे पास वेरिएंस आ जाए। तो हम इसीलिए मेजॉरिटी ऑफ द टाइम वी आर यूजिंग एसडी एज माय appropriate measures of dispersion rather than mean or range or variance. Clear? Clear है ये चीज? जी सर। So अब यही क्वेश्चन अगर अबाउट मीडियन हो जाए देन क्या करोगे? अगर यही सेम क्वेश्चन अबाउट मीडियन आता है देन व्हाट यू हैव टू डू? सर मीन की बजाय मीडियन निकालेंगे और उसको पुट कर फर्क देंगे। कहाँ आएगा? सिर्फ जो फर्स्ट कैलकुलेशन जो तुमने यहाँ पे मीन की निकाली है उसकी जगह मीडियन करोगे, बाकी सारे स्टेप्स से x माइनस मीडियन स्क्वायर, बाकी सारी चीजें सेम रहेंगी। द ओनली थिंग इज द डिफरेंस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ मीडियन ओवर हियर। फाइन। नाउ अगर वही अब कंटिन्यूअस ग्रुप आ गया तो बस सिर्फ एक मिड पॉइंट एडिशनल लेना है, मिड पॉइंट लेने के बाद उसको सॉल्व कर सकते। ठीक ठीक है जी सर। ठीक। अब देखो एक इसके अंदर लास्ट रह गया मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन में, इफ इट इज अ शॉर्टकट मेथड। अब अगर हम इसको शॉर्टकट मेथड से देखते हैं तो शॉर्टकट मेथड क्या है? हाँ देखो, अगर तुम इन क्वेश्चन को एनालाइज करो डिस्पर्जन को, तो क्या किया हमने? 2 स्टेप्स में क्वेश्चन सॉल्व किया ना। वी हैव सॉल्व द क्वेश्चन इन 2 स्टेप्स। पहले स्टेप में हमने सेंट्रल टेंडेंसी निकाल ली, फिर हमने डिस्पर्जन कैलकुलेट की, चाहे वो मीन डेविएशन लिए, चाहे हमने वो स्टैंडर्ड डेविएशन ली, चाहे वो वेरिएंस लिया। जो 2 स्टेप में क्वेश्चन हुआ, फर्स्ट सेंट्रल टेंडेंसी देन डिस्पर्जन। ठीक। बट हम क्या कर सकते हैं? वी कैन सॉल्व इन अ सिंगल स्टेप। हम एक ही स्टेप में सॉल्व कर सकते हैं, बट वो अब हम कर रहे हैं। शॉर्टकट मेथड क्या है कि 2 स्टेप ना करके वी कैन यूज इट विद अ सिंगल स्टेप। we can use it with a single step, but that single step problem can only be solved if it is a case of about mean. अगर हमारा about mean है then only we can calculate it with a single step. अगर about median या mode है तो हमें जैसे हमने अभी पहले किया है उसी से ही करना पड़ेगा। No other alternative available with me. मेरे पास और कोई तरीका नहीं है, मुझे इसी तरीके से ही करना पड़ेगा। पहले मोड निकालना पड़ेगा या पहले मीडियन निकालना पड़ेगा, उसके बाद मैं डिस्पर्जन की कैलकुलेशंस करूँगा। बट अगर वो क्वेश्चन अबाउट मीन है जो मेजॉरिटी ऑफ द टाइम होता है, मेजॉरिटी ऑफ द टाइम अगर स्पेसिफिक नहीं है तो हमने अबाउट मीन ही कैलकुलेट करना है। सो इन दैट पर्टिकुलर केस आई कैन यूज दीज मेथड्स नाउ इन विच वी डोंट हैव टू डू विद द 2 स्टेप प्रोसेस। हमें अलग से मीन निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वी कैन डायरेक्टली गो विद द डेटा। हम डेटा पे डायरेक्टली जाएंगे और वहीं से एक ही स्टेप में सीधा स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे। ठीक। वी कैन डायरेक्टली फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन इन 1 स्टेप ओनली इन स्पाइट ऑफ सॉल्विंग इट ऑन द 2 स्टेप्स। ठीक। सो फॉर दैट द रूल ऑफ शॉर्टकट मेथड विल कम। So now we'll discuss what is the shortcut method. So like suppose this will be your data. So this will be the data. Answer will remain the same. We will check the answer also. For SD the answer will remain the same. That's why I'm taking the same question from this method so that you can compare that the answers will remain the same in both the methods. But the thing in this type of data is you have saved your first part. That you have not to calculate mean as an individual case and then you have to find the dispersion. For both the steps it will be combined in a single formula. एक ही formula में सब कुछ आ जाएगा। ठीक। We will be doing one single formula and it automatically calculate the standard deviation of the data. But about mean, I am again repeating, this particular method can only be applied if it is case of about mean. If it is about median or about mode, we cannot use this method.
So for median or mode, we cannot use this method. This can only be used in case if it is about mean only. This method. Median and mode, you have to do it with the initial method only. Fine. So write down the formula for the same. And it is for, basically we are using this for discrete or continuous group data. For individual discrete, it is very simple to calculate the x minus x bar. So we are basically using this method in case of the grouped data. Fine. So the representation, yes, I forgot to tell you that the standard deviation is represented by the symbol sigma. So the sigma like this. So this is the representation of this. This symbol is to represent the sigma. Clear? So this is the symbol for the standard deviation. So sigma is the representation figure for the, if anywhere written is sigma, so that means it is a SD. Fine. So now we have to calculate the SD with the direct method. So so sigma is equal to, so the formula for standard deviation becomes under root of, there is, that is the problem in the online form. We can, there's a difficulty in writing the formulas. So it will be like summation of fx, formula is summation fx square divided by summation f. Summation of fx square so this is summation of fx square divided by summation f minus summation of fx minus summation of fx divided by summation of f whole square. Fine. And then the under root of the same. And the under root of the same. Right? This becomes the formula. So under root of summation fx square divided by summation f minus summation fx divided by summation f whole square का under the root. Clear वही formula? Or I will write, it will be more clear, I write in the whiteboard. Wait a minute, I will write this formula in the whiteboard. So this will be sigma is equal to under root of summation f x square divided by summation of f minus summation of fx
divided by summation of f whole square ka under the root. So this is the formula for summation. So if you'll see, the previous is the same, but the writing style is different because in Excel we have to work on the brackets. We cannot make this representation, so that's why I've written in this whiteboard. So which says summation of fx square divided by summation f minus summation fx divided by summation f ka whole square ka under the root. So now we have to find these step by step and put in the formula to get the value of sigma. Clear? So you will take this. I will again switch over to the Excel sheet so to calculate the things. So now you will be clear with the formula and you can compare the things like summation fx square divided by summation f minus summation fx divided by summation f ka whole square ka under the root. So that becomes the formula for the. So I am switching from the whiteboard to the Excel. Okay. So Excel is visible to you now? Yes, sir. Okay. So now you, hello. So now you have to calculate first the x square. So there is one term called x square. So you have to calculate x square first. So x square. So x square means x into x. So that means this. So is equal to this into this. So that becomes your x square. So we will calculate x square for all. So then you have to calculate x square into f. So next becomes fx square. So fx square is equal to this into f. So step by step you have to solve, you get the answer. So fx square for all you have to calculate fx square. So you are calculated summation fx, not summation but fx square you have calculated. Now you have to take the summation. So let's take the summation of all. So after summation of all you will get 34570. So you will get the answer of summation fx square. Then you want divided by summation f. So you will take the summation of this f. So you will get as 42. So now you will get like, so you have already calculated summation of fx square divided by summation f. Then next is to calculate summation of fx. So first you have to calculate fx. So fx means f into x. So which will be equal to f into x. So this is your all individual fx's. So you have calculate fx, then summation of fx, you have to take the sum, then divided by summation f. So now you have calculated each and every figure, put in the formula and calculate the answer. So first is summation fx square. So which will be equal to this divided by 42. So this becomes your summation of fx square. Summation of fx square divided by summation f minus, or take in the brackets, take in the bracket so that there will be no error in the, because it has to work on the BODMAS rule. So first you have to solve this, that summation of fx square divided by summation f minus of, again brackets, summation of fx divided by again summation f raised to the power 2. Clear? So raised to the power 2, and overall, and for this you have to make a power function. So that becomes raised to the power 1 by 2. Clear? So this becomes this E93 by C93, that becomes summation of fx square divided by summation of f is C93 minus summation of fx divided by summation f. So summation of fx is
this one which is f93 divided by summation f का square, तो raised to the power square, and पूरे का under the root है, so raised to the power 1/2. So if you solve this, so you will get 3.493. So same answer आ गया. So if we compare these two data, the answer will be the same. So answer will be the same in the both the cases. So that is, but here in this particular process we are doing in the one step. We don't we don't have to calculate mean as a separate. यहाँ हमने पहले मीन अलग निकाला था, उसके बाद ये कैलकुलेशंस करी थी, बट यहाँ हमने एक सिंगल फॉर्मूला अप्लाई किया, विल डायरेक्टली कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ सिग्मा. क्लियर? कोई डाउट है इसमें तो बताओ. यहाँ तक कोई डाउट? नो सर. क्लियर है ये? नाउ जैसे हमने मीन में स्टेप डेविएशन मेथड किया था और एज्यूम्ड मीन मेथड किया था, इन द सेम वे वी कैन हैव द शॉर्टकट मेथड ओवर हियर आल्सो. सो हियर द फर्स्ट इज स्टेप डेविएशन. जैसे वहां का स्टेप डेविएशन था, ऐसे यहाँ पे हम स्टेप डेविएशन होगा. सपोज दिस इज द अगेन द डेटा, आंसर विल रिमेन द सेम. So suppose this is the data. Now we have to solve it with step deviation. So step deviation में हम क्या करेंगे? We will calculate dx. dx निकालेंगे, which will be equal to x minus a. यही किया था. So x minus a निकालेंगे तो a मिनिमम क्या है? 24, मैक्सिमम है 33. So 24 और 33 का एवरेज. So 24 plus 33 कितना आता है? 24 प्लस 33 डिवाइडेड बाय 2, तो 28.5 आता है. अब 28.5 से नियरेस्ट वैल्यू चेक करनी है डेटा में कौन से, तो 29 आ गई. सो वी विल टेक एज्यूम्ड मीन एज 29. तो a की वैल्यू हम ले लेंगे 29. सो अब dx निकालेंगे, to subtract each and every value with this 29. So 24 minus 29, this becomes, so which will be equal to this minus 29. So this becomes your dx. अब ये dx आ जाएगा हर का x minus a. So for each value we have to calculate dx minus a. So we have calculated dx minus a as this one. So हमने कैलकुलेट कर लिया इस वे में. फाइन. सर आपने इसमें, हाँ जी सर, आपने इसमें 29 क्यों दिया है? हमारा रिजल्ट तो 28.5 आया था. 28.5 आया ना, लेने में मैं 28.5 भी ले सकता हूँ, पर मैं ये क्यों कर रहा हूँ? कैलकुलेशन को रिड्यूस करने के लिए. अगर मैं 28.5 लेता हूँ तो मैं कैलकुलेशन आसान कर रहा हूँ या मुश्किल कर रहा हूँ? ये 24 माइनस 28.5 करेंगे तो माइनस 4.5 आंसर आएगा, तो वो कैलकुलेशन और मुश्किल हो जाएगी ना. तो हमने क्या करना है, इस वैल्यू से नियरेस्ट डेटा में देखनी है कौन सी वैल्यू है. इस वाली वैल्यू से नियरेस्ट वैल्यू देखनी है हमारी डेटा में कौन सी है. तो इससे नियरेस्ट 29 आ रही है ना, तो दैट्स व्हाई वी हैव टेकन 29 एज द एज्यूम्ड मीन. लेने में कुछ भी ले सकते हो, एज्यूम्ड मीन अपने आप ही बता रहा है, एजम्पशन मेरी है. मैं a लूँ, मैं 29 लूँ, मैं 24 लूँ, मेरी मर्जी है. पर मैं एज्यूम्ड मीन कर क्यों रहा हूँ? टू रिड्यूस माय कैलकुलेशन. तो मैक्सिमम रिडक्शन कब होगी? जब मैं सेंट्रल वैल्यू लूंगा और जो भी वैल्यू आई है उससे नियरेस्ट वैल्यू जो डेटा में प्रेजेंट है वो चूज करूंगा. ठीक. तो अब ये dx आ गया. अब फॉर्मूले में, अब ये हमारा फॉर्मूला था एसडी का, हमारा एसडी का यही वाला फॉर्मूला था ना. अब बस तुमने क्या करना है, जहां जहां x था उसको dx रिप्लेस कर देगा, बस बाकी सारा कुछ सेम. दैट बिकम्स योर एसडी नाउ. ठीक. सो
बट वेयर देयर इज, अब x को भूल जाओ, x पे काम ही नहीं करना, अब हमने dx पे करना है। तो जो जो चीजें हमने पहले x पे निकाली थी वो dx पे निकालेंगे। सो फर्स्ट विल कैलकुलेट dx स्क्वायर। तो पहले हमें dx स्क्वायर कैलकुलेट करना है। तो dx स्क्वायर क्या आया, इज इक्वल टू दिस इज द dx इनटू द सेम, सो दिस बिकम्स योर dx स्क्वायर। तो ये हमने dx स्क्वायर निकाल लिए। इसके बाद इसका समेशन करना है, तो इसका समेशन किया। देन वी हैव टू कैलकुलेट समेशन ऑफ f, तो वो हमारा ऑलरेडी 42 है, फाइन। देन वी हैव टू कैलकुलेट f dx, सो वी हैव टू कैलकुलेट f dx, so which is equal to f multiply by dx, so this will be your f dx। तो ये हमारे पास f dx आ गया। देन डिवाइडेड समेशन करना है इसका, तो वी विल टेक द सम ऑफ दिस, सो -22, देन वी विल पुट द फॉर्मूला इन द सेम, सो विच विल बी इक्वल टू, अब जब हम यहाँ पे लगाएंगे तो क्या आएगा, 75 नहीं, क्योंकि हमने एक गलती करी, वी हैव नॉट कैलकुलेटेड f dx स्क्वायर। यहाँ पे ये गलती करी हमने, फर्स्ट हमने dx स्क्वायर का सम कर दिया, वही जो मैं कह रहा था गलती, बट हमने f dx स्क्वायर का सम करना है। सो फर्स्ट वी हैव टू कैलकुलेट f dx स्क्वायर। ये छोटी छोटी गलतियां होती हैं, ये ध्यान रखनी है कि यू डोंट हैव टू मेक दीज मिस्टेक्स। सो f dx स्क्वायर का मतलब यू हैव टू मल्टीप्लाई दिस इनटू f फर्स्ट। तो पहले ये मल्टीप्लाई करोगे, इसकी समेशन की हमें ज़रूरत नहीं है, सो वी हैव टू मेक द सम ऑफ दिस, फाइन। सो अब यहाँ पे अब f dx निकालना है, सो विच इज f dx, सो f dx इज इक्वल टू f into dx, so now this becomes your f dx। now the summation of this f dx is, now we apply the formula, so which will be equal to summation of f dx square divided by summation of f minus of summation of f dx divided by summation of f का स्क्वायर and then raised to the power 1 by, fine। So you get the same answer, सेम आंसर आ गया, सेम आंसर आया है। अब ये देखो, अगर तुम कंपेयर करो कैलकुलेशंस, किसकी कैलकुलेशन आसान है, यहाँ देखो एक्स स्क्वायर की वैल्यू ये आ रही थी, यहाँ सिर्फ dx स्क्वायर कितना आ रहा है, दिस वन। तो कौन सी कैलकुलेशन आसान है, ये तो मेरे पास एक्सेल का ऑप्शन है, तो मैंने सारी कैलकुलेशन एक्सेल से कर दी, बट अगर मेरे पास नोटबुक कॉपी होती तो कौन सी कैलकुलेशंस आसान लग रही हैं तुम्हें, शॉर्ट डायरेक्ट मेथड या स्टेप डेविएशन मेथड? स्टेप डेविएशन में हो सकता है हमें कैलकुलेटर की जरूरत ही ना पड़े, हम डायरेक्टली ओरली कैलकुलेट कर लेंगे सारी वैल्यूज, ठीक। तो आंसर क्या आ रहा है, सेम आ गया, बट ये आंसर सेम आया क्यों, आना चाहिए था सेम, तुमने ये पूछा ही नहीं क्वेश्चन, तुमने यहाँ पे क्वेश्चन ही नहीं पूछा, ये आंसर की सेम कैसे आ गया? बताओ, ये तुम्हें क्वेश्चन पूछना चाहिए था जो तुमने पूछा नहीं, ये आंसर सेम कैसे आया? हमने अपनी मर्जी से a माइनस किया, हमने a प्लस नहीं किया था मीन कैलकुलेशन में। हेलो हेलो, यस सर। हमने जब अपनी मर्जी से a माइनस किया था तो आंसर में a प्लस नहीं किया था, किया था ना? यस सर। तो यहाँ तो किया नहीं हमने,
आंसर तब भी सेम आ गया। तो यहाँ a प्लस नहीं करना चाहिए था हमें, बताओ। टेल मी द रीजन दैट व्हाई इट इज हैपनिंग लाइक दिस। आंसर सेम कैसे आ गया? हमने a ऐड बैक कहीं भी नहीं किया क्वेश्चन में, पर हमें करना चाहिए था अपनी मर्जी से। अगर a माइनस किया है तो प्लस a भी तो करना चाहिए था, which we have not done. So why the answer will come right? सेम आंसर कैसे आ गया तब भी? ये देखो वो सेम आंसर क्यों आया। हम इसमें भी प्लस ए करते और इसमें भी प्लस ए करते, तो ये आपस में प्लस ए स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर आपस में कैंसिल हो जाते हैं ना। तो इसीलिए स्टेप डेविएशन के केस, स्टैंडर्ड डेविएशन के केस में हमें प्लस ए करने की नेसेसिटी नहीं है। So we don't need to add back a in case of standard deviation. ठीक, तो स्टैंडर्ड डेविएशन के केस में हमें a ऐड बैक करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज देयर आर टू टर्म्स। अगर यहाँ पे भी a ऐड करेंगे, यहाँ पे भी a ऐड करेंगे, दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो इसीलिए इंटरनली कैंसिल हो जाएंगे, इसीलिए we don't need to add a in the case of standard deviation. That's why our answer will remain the same. तो इस वाले केस में और इस वाले केस में देखो आंसर हमारा सेम आ गया। ठीक, अब ये देखो हम ये कैलकुलेशन एक्सेल में कर रहे हैं, हमने कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई है ऑन द नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस। हमने कोई इसके अंदर 2 डेसिमल प्लेसेस कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई है। वो जितने भी डेसिमल ले रहा है वो कैलकुलेट अपने आप कर रहे हैं, तभी ये आंसर एग्जैक्टली सेम आ रहा है, बिल्कुल डिट्टो सेम आंसर आ रहा है ना। पर अगर तुम करोगे मैनुअली कैलकुलेशन में, तुमने मैक्सिमम 3 डेसिमल प्लेसेस तक लेने, तो 3 डेसिमल प्लेसेस में ये हो सकता है कि इसका आंसर अगर 3.49 आ रहा है तो तुम्हारा 3.51 आ जाए। ठीक, बट बिकॉज ऑफ दैट राउंडिंग ऑफ द एरर्स इज देयर, बट अदरवाइज द आंसर विल बी द सेम। ठीक, क्योंकि यहाँ पे तो हम एक्सेल पे सारी कैलकुलेशंस कर रहे हैं, तो इसीलिए वो एग्जैक्ट आंसर आई जा रहे हैं, बिकॉज वी आर नेवर रिस्ट्रिक्टिंग द डेटा टू एनी फ्रैक्शन, क्योंकि हमें कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ रही है, हम डायरेक्ट एक्सेल में ही कैलकुलेशंस कर रहे हैं। फाइन इनफ। ठीक, नेक्स्ट आता है इसमें लास्ट जो मेथड है, दैट इज, सॉरी ये स्टेप डेविएशन नहीं था, तुम ना बताते नहीं हो, अगर मैंने भी गलत लिख दिया तुमने भी एज्यूम कर लिया कि ये यही है। दिस इज एज्यूम्ड मीन मेथड। स्टेप डेविएशन ये वाला है। अब दिस इज नाउ द स्टेप डेविएशन। स्टेप डेविएशन में क्या है, अगर हमने dx निकाला, उस पूरे dx में से हम कुछ कॉमन भी ले सकते हैं, देन बिकम्स इट इज अ स्टेप डेविएशन मेथड। तो अब इसमें तो कोई कॉमन आ नहीं ना रहा, सो इफ फ्रॉम दिस डेटा नथिंग इज कॉमन, सो विल हैव टू टेक द डिफरेंट डेटा। हमें डेटा दूसरा लेना पड़ेगा। लेट्स टेक दिस डेटा, हम ये वाला डेटा लेते हैं। अब हम इसका निकालते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक, सो फर्स्ट यू हैव टू टेक द मिड पॉइंट। पहले तो मिड पॉइंट ही लेना पड़ेगा क्योंकि कंटिन्यूस डेटा है। सो मिड पॉइंट हमने निकाल लिए थे ऑलरेडी, हम वहीं से उठा लेते हैं। सो दिस विल बी आवर मिड पॉइंट्स। तो दिस विल बी आर मिड पॉइंट्स। सो हमने ये मिड पॉइंट निकाल लिए। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, द नेक्स्ट स्टेप इज, अब वही वाला फॉर्मूला लगाना है, ये वाला। सो वी विल वांट, अब पहले तो डेविएशन, अब एम पे, एक्स को तो इग्नोर कर देना, अब एम पे ही सारा काम करना है। सो अब यहाँ से हम क्या निकालेंगे, पहले क्या निकालेंगे बताओ? डीएम निकालेंगे ना, अब एक्स को तो भूल जाओ। सो डीएम निकालेंगे विच इज मिनिमम प्लस मैक्सिमम डिवाइडेड बाय 2। सो यहाँ पे क्या निकला, 12.5 प्लस 12.5 प्लस
32.5 divided by 2. So 22.5 आया. 22.5 डेटा में प्रेजेंट भी है, so we will take assumed mean as 22.5. So 22.5 अगर हमने लिया तो m minus a is the formula, और ये हमारा क्या आ जाएगा, मैं इसको बोल्ड कर देता हूँ, that is your a. So 22.5 is your assumed mean, so this becomes minus 10, minus 5, then 0, then 5, then 10. So this becomes your dm. Now next is you want dm square, so calculate dm square. No, before solving dm square, यहाँ पे अब ये देख रहे हो पूरे डेटा में से 5 कॉमन ले सकते हैं, पूरे डेटा में से 5 कॉमन आ सकता है. So apply the, to further reduce our calculation, we are calculating dm dash. So dm dash is equal to dm divided by I. 5. Fine. So dm by 5i किया, so which becomes, so which is equal to this divided by 5. So this become minus 2. So minus 2 1 0 1 2. तो जो हमारा डेटा देखो पहले ये था, अब पहले इस पे कैलकुलेशन करनी पड़ती, एज्यूम्ड मीन ने ये कर दी, स्टेप डेविएशन ने और फर्दर ये रिड्यूस कर दी. तो इस पे देखो कैलकुलेशन बहुत आसान हो गई ना करनी. ठीक. नाउ वी हैव टू, अब क्या करना है, वी हैव टू रिप्लेस इन दिस फॉर्मूला. अब ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, अगर हम SD का फॉर्मूला देखें, यहाँ पे अब जहां जहां dx था उसकी जगह क्या आ जाएगा, dm डैश. जहां जहां x था वहां क्या आ जाएगा, dm डैश. सो f dm डैश स्क्वायर डिवाइडेड बाय समेशन f माइनस समेशन f dm डैश डिवाइडेड बाय समेशन f का स्क्वायर का अंडर द रूट. बट अब इसमें क्या होगा, अगर हमने यहाँ पे डिवाइडेड बाय i किया है, सो वी हैव टू मल्टीप्लाई द लास्ट विथ i. ठीक. सो वी हैव टू मल्टीप्लाई द सेम विद i. सो क्योंकि अगर वहां पे हमें a प्लस करने की जरूरत नहीं है, बट i से अगर डिवाइड किया है तो i से मल्टीप्लाई करना है. और दूसरी चीज ये ध्यान देनी है, ये जो i से मल्टीप्लाई करना है ये अंडर रूट के बाहर है, i का अंडर रूट नहीं करना है. You don't have to give the multiplication of this I. So I am again writing it in the whiteboard, the formula, so that it will be more clear to you. So this is the formula we have already done. So I'm writing the fresh formula. One second. So that becomes sigma is equal to under root of summation f dm dash sigma summation f dm dash square divided by summation of f minus summation of f dm dash divided by summation of f whole square. यही वाला फॉर्मूला होगा यहाँ तक. तो अब into i, so into i is out of this under root. into i जो है वो अंडर रूट के अंदर नहीं है, into i is outside this under root. So that becomes the formula for your sigma under your step deviation method. So this I is outside your. So if I close this whiteboard, Yes, sir. Yes, sir. So if we'll see this, so now we'll apply the formula, so which will be equal to, so first we have to calculate, sorry, पहले हमें calculate भी तो करते हैं. So first we have to calculate dm dash square. So dm dash square. So dm dash square is
We can write it and manually only 4 1 0 1 4. So that is your dm dash square. Then you have to multiply with f. So f dm dash square. So f dm dash square is equal to, f is this, so which will be equal to f into dm dash square. So which is 6 into 4 24, 8 0 5 and 16. So this becomes fdf dash square. Then you have to take the summation of the same. So we'll take the sum as 53 divided by summation f. We have to calculate, that is 32. Then you have to calculate summation f dm dash. So f dm dash. So f dm dash is f, so is equal to f into dm dash. So this is your dm dash. So minus 12 minus 8, then 0 0 5 and 8. So that becomes f dm dash, then summation of the same minus 7. So now you will get each and every value, put in the formula, you get the answer. So it will be like this, summation f dm dash square. So 53 divided by summation f minus summation f dm dash minus of summation of f dm dash divided by summation f raised to the power 2, fine, raised to the power 2, then raised to the power 1 by 2, fine. So this becomes your this function and multiply by 5. So there may be some brackets error. So this bracket is closed, this one, for this it is this, for so there is some error in the bracket, h120 divided by c120. So this is bracket close, so this is the another bracket close square, and then I think this is correct, but why it is giving the error? Not to trying a type of formula. Equal to f dm dash square divided by summation of minus of summation of f dm dash f raised to the power 2 and into 5. 6.34, that becomes the standard deviation for this particular data. Clear with these concepts? Yes, sir. So your so that is your standard deviation. So this is your standard deviation or measures of dispersion. Last is variance.
variance is none other than we have calculated the dispersion, standard deviation. You'll square the standard deviation, you'll get the variance. So that's why there are the four tools: range, mean deviation, standard deviation, and variance. So with this, your measures of dispersion is also over. So from the next class, we'll start the measures of correlation and regression. Fine. So we have 5 minutes with us. If you have any doubts, we can discuss, or otherwise we will meet next week. If anybody has any doubts of any kind, we can discuss it. Otherwise, we will meet the next week. Any doubts? No, sir. No, sir. So then can leave the class. Attendance होगी sir. Attendance, I have already taken it. I have downloaded from the system. Okay, sir. So if anybody has any doubt, we can discuss. Otherwise, we will leave the class. Okay, Okay, sir. Thank you. Okay, so we are leaving the class, and I'm stopping the recording.